Good evening. Uh, Viewers from this is Ali from Sena family, and today we have with us a very special guest, Dr. Rashmi Tyagi, who is Namaskar. huh? Rashmi Tyagi, Namaskar, everyone. DG, who is a PhD in chemistry from IIT Roorkee, and she's a B.Ed and gold medalist, and M.Ed from Bombay University, and she has taught chemistry at University of Mumbai and MSc, MS University Baroda. She has a brilliant academic record of 25 years. He has worked as principal in the CBSE school, trained as a PABC principal at IIM Bombay. It's very prestigious. Bangalore. Bangalore. I am Okay, Bangalore. okay, okay. And her research papers in chemistry, environment, science, rural, urban, farming, innovative teaching, pedagogy, and nanotechnology, Bloom, uh, Bloom architecture has brought a lot of knowledge to the people. She has she has given scientific talks on All India Radio, NABRET, trained peer assessor for accreditation, selected as peer assessor by CBSE, Ideal Principal Award 2008, Commendable Paper Presentation Award, NCERT, CBSE, Conference 2010, Education of the Year Award 2013, Science Communicator Selection, Indian Science Congress 2015, honored by Srinagar University, Aquaponics, Animal Science Congress 2016, School Bus and Child Safety Award 2017, which is extremely important for the children in Mumbai and all over India. Leadership Excellence Award UAE 2018, Lifetime Achievement Award 2020 UPACRI, Campbell University, USA, Outstanding Contribution to Community Award 2022 ICSI, Innovation Excellence and Rural Education 2020 ICSI, Sri Shakti Samman Award 2020 IUTF, Painting and 2022 at IUTF, CV Raman Education Award, the biggest, 2021. वही हमें कह रहा था कि सूरज को आईना क्या दिखाना मगर दिखाना पड़ा. Dr. Tyagi, we welcome you to the show and we hope you will enjoy being with us. And we now hand over the reins of the show to you. Please carry on from now, Dr. Tyagi. Thank you. It's really, you have honored me by saying such good words about the work which I have done and about my qualifications. So thank you so much for that. And I thank Sina family because they have invited me for this talk. And as you are not asking me any questions, then I will just introduce myself. So I'm from basically Uttar Pradesh, and from the Voice cut रही है. family, and my father here, University of Roorkee, 1948 batch. That is the IIT today. Am I audible? Am I audible? Okay. So that way, I got the opportunity to do my studies from the different places. Like I've done 10th from Bareilly, 12th from Lucknow, and then BSc from Banaras Hindu University. So the Almighty has given me all the opportunities to learn. So that way, I thank God for all this. And then later on, I've done my doctorate in chemistry from IIT Roorkee. So Mr. Ali had
already told about me. And really, I think I was very lucky to be in the academics at that time. So that time, the women, they were not educated so much. So whenever somebody, used to say that you study more, then they used to say, why she's studying? She's not going to work. She's just going to look after her family and be a housewife. But at that time, when I was in the IIT Roorkee, that time it was University of Roorkee. Then I had many friends who were studying in engineering and many in architecture, and then they were doing doctorate. So that way, I thought our generation was a bridge between today's women and that time. And we got very good opportunity to learn. And as you know, that time the girls were told to learn the embroidery, to do the painting, to learn the music. So we had that advantage. So we could cultivate our hobbies. So I was participating in painting exhibitions at IIT. I got some prizes also in the exhibition. And then I was good at, uh, embroidery also, any creative thing. I liked very much. So I spent all my time in good things, and I was second best girl athlete in the university. Mm. In late 70s, I don't remember exactly the year, because the one who was the first, athlete, she is now the vice chancellor in a university in Delhi. So that way we were, groomed that it was, you can say, all round development. So we cannot say that time the girls were not given the opportunities to study. So this is what I have studied. And that time I had interest in dramatics also. In annual functions, I was the main lead at IIT Roorkee for these dramas. We were attending youth festival also at Pilani, at Allahabad that time. So of course I was studying and I got my degree in chemistry, like PhD in chemistry. But then we were doing all these things also, and very good plays we had done. You know, Vijay Tendulkar's uh, plays, and then Khamosh Adalat Zari Hai, and then some other plays like Aadhe Adhure. I mean, it was really a wonderful time where the learning was taking place. It is not that only I was doing all this; all of us were doing all this. So this is my about, you can say, my schooling, my university, and all that. No, it's excellent, Doctor, to hear all this. But as a woman and a girl at that time, was there any opposition from the family or from the family members? Um, those times were different, mindsets were different in those days. But you have proved that everything can be changed. And you've done that. You proved not only to prove, but you've done that and shown to people that even in the 53s, 50s, where the mindsets were very closed, very stringent, you have broken all those barriers and you have come out, emerged as a winner. So could you give us a little insight as to how you did this? About what? Please say it About, again. you see, in 1950, 53, 55, 58, when you entered Turkey and you No, no, passed no, out no, 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 sir. I uh, entered IIT Roorkee in 1975. 75, okay. But as a lady, as a woman who taken up education, and besides you entered into a field where which is quite professional. Was there any opposition from family members or from I mean, relatives? I mean, I this mean, is very ridiculous uh, that at that time.
As I told you, my father was already from IIT. So Uh-huh. we were encouraging the girls, the daughters, and many of them became IAS, IPS, and they had gone abroad for the research. So this we can talk about maybe around 45, 1945, and even 55 also, because that time I just entered the world. I think women were in India, they were given lots of respect and lots of opportunities. Sarojini Naidu was there, Indira Gandhi ji was there, and then Nehruji's sister. What was her name? Vijayalakshmi Pandit. Yeah, yeah. I think I cannot dream and I cannot think in my wildest dreams that there was any opposition. Actually, only the encouragement. That time was better than today's time. Oh yeah. For us, I should say. I will Yeah. not say the whole Uh, India. uh-huh. We were being educated, and even we were playing games like lawn tennis, billiards, Yeah. because in the IIT the opportunities are there still. Yes. Yes. They say that all round development should be, it is not the studies and mugging up, but Uh-huh. then how to make a team, the social intelligence, the emotional intelligence. Uh-huh. So these things are imbibed by us in the IIT. So I think we were so liberalized that But time. did you marry into a liberal family? See, that I will say that when a girl in India goes to another family, then she has to adjust. And in my trainings, I always ask the teachers that are you giving training to your adolescents, that when a girl, she goes to a new family after her marriage, that how she is going to adjust there. And then I also ask them whether are you telling the boys that what kind of relationship should be there between a girl and a boy Mhm. after marriage also. So it is our duty of the teachers and the parents that we should train our children and we should guide them that how they are going to lead their married life. Yes. So, so that way, if these things are taken into consideration, our this generation will be very comfortable, because we hear of the divorces, and the separations these days. But those days, as you asked me that whether there was opposition, of course, the society was not so liberal, Yes. so we had to go to our, after marriage in boys' family, and some kind of a, I can say that Kashmakash. things were happening. Mhm. That we have to prepare food, we have to cover our head, like wearing saris. That way, a little bit was there. Otherwise, they accepted the education, and I mean those times were different because mother-in-laws and maybe they were also educated and semi-educated, but they they had to follow that tradition, and they expected the bahu maybe to follow the same traditions with certain you know adjustments. So I think you must have married into a similar family, which was again an educated family. And I think you were very fortunate, despite your adjustment, to have emerged into such a fine person as you are now, Thank you so much. I give the same compliment to you people ma'am. also. Thank Those you. are, yeah. Uh, So, tell me something, ma'am. Tell me a little more about your, uh, life after your graduation from IIT, because you were topper, you were a gold medalist, and after your marriage, you're bringing up children. Well, how was it? Was it? I mean, I know you. I would say you lived in the lap of luxury, but everybody does basic thing. But bringing up children is primarily a mother's thing, forte. So how was this? How was this handled by you, ma'am?
Yeah, that question is really a good. You can ask everyone, all the ladies, and I will say that uh, bringing up the children, Uh, it is not easy, and no. especially if you're my husband, he was in ONGC, and Uh-huh. he also got many awards for for about that at Bombay High there were the drilling ships, drilling rigs are there, and they were on fire sometimes. You might have heard. So my husband was busy there, and he was helping to control all that, and I was alone at home with my two children, and it was not easy, alone to look after the children. It was like an army life. But yes, My husband was working offshore for drilling rigs for oil, ONGC, oil and natural gas commission. yes, 15 days offshore, 15 Yeah, days yeah, onshore. 14 days at this one, and at any time he was going, Uh-huh. and it was not easy, even to Uh-huh. handle that, because when something bad was happening offshore, and then the whole news channels were covering that, and once there was a fire in Agartala, and my husband was in the team, and then they were just telling that there is a bad news, that something has happened on this rig, and then you can understand that when a wife is watching and when you hear such news, how you can handle. Then I had Mhm. gone to the highest officer in Baroda. He told me that everybody is safe, you don't worry. So those things, and the children, looking after their education, and mostly when they are kids, they are having all these, sometimes fever is there, sometimes typhoid is there, sometimes jaundice is there. So it was so difficult for me to handle it alone, so that way. And then because we are educated, that even your families, the ladies are so much learned, so we could manage very well the studies. We could motivate our children, and because I was also a known person in education, so all the teachers were cooperating, and I was helping them to by doing some honorary jobs in their school, like in Mumbai. Once the Hindi teacher was not there in my daughter's school, Kamal uh, convent at Bandra West. Mhm. So then I had taught them for 3 4 months, so they were thankful to me. So that way we were helping. Even for my sons, he's from Arya Vidya Mandir, that is also in Bandra West. So there also I was contributing there. So that way, we ladies not only contributed at home to the children for the balanced diet and looking after them, but the ladies of that time, we have even looked after them in the schools, because either we were teacher in their schools or we were helping the schools. So I want to tell you, Mr. Ali, that our generation was really good, because as you said that when you had gone after marriage to another family, then did you have any problems? But those problems were okay, because like my mother-in-law, she said that you should cook. Like, I've never cooked before marriage, because my father was in irrigation department, and he joined irrigation department in 1948, when the Britishers have left India. Mhm. So they were the fleet of servants and the bungalows and all this. So Mem Sahab was there, and I was called as baby by all the servants. Even at the MSc, they were telling me baby G. So, but I had done that, and that has taught me something. So now the girls, like even my daughter and other girls, which I see, they cannot adjust that much. Mhm. That we could never think The of. tolerance level has gone down. Patience. Yes, yes, Patience. it You were has very gone down. patient. Yeah, yeah. You, So I mean, that, you bore everything. Now it's a retort at the first moment. yes, yes, yes. जवाबदारी बहुत जल्दी हो जाती है. जी हाँ, बहुत जल्दी हो जाती है, एंड आजकल
तो ऐसा लगता है कि boys they have to adjust as Yes, much as the girls are adjusting. yes, yes. They have their mood swings and the children are sent. बच्चों को आप भेज देते हैं अ, वहां जी पर कि जहां पर somebody else look जी after your children. जी 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 जी। I've never sent my children for this. I kept an ayah, हम्म, a good lady, because जी I was in Maharashtra. We get very जी good ladies here. जी जी जी। So, because I have seen in the, these where the children are sent for the जी, whole day, हम्म, they are not being fed properly. Even I've heard 3 months old child is sent there because mother is working, हम्म। and how they feed the children. Because I had an experience with my granddaughter. So my daughter, she's from IIM and she's an engineer. So after engineering, she has done her, this management from IIM Bangalore. हाँ, She was working. She said, "Mummy, come and help me." I was हम्म, also working as principal at Bharti Vidyapeeth, Mumbai. हम्म, But I had gone there. Then she said, "Why don't you admit her in a place where she'll be looked after for 5, 6 hours?" हम्म, There, the behavior with the children was so bad. They were हम्म, literally, with the spoon, they were feeding the children in their, throats, not ओहो, their mouths. So I said, no, don't आप do this. so forcing the food down। Yeah, yeah. हाँ, नहीं खाएगी तो फिर भूखी रहेगी। भूखी रहेगी और वो मम्मी पूछेंगी आकर कि वे आज खाना नहीं खाया क्या इसने. हाँ हाँ The child is crying, and I mean that is a Bangalore city I am talking about, and that area is the best area where आई नो। she was residing. So there we were having these kinds of things. So I'm just comparing, that our generation was really, I'm including you people also, the man also. नहीं नहीं, Yeah. रैम पस थे, बहुत रैम था उस टाइम। जी हाँ. So the man were also helping, for the families and all that. So we were adjusting with each other. हाँ We हाँ never thought of divorce. हाँ We never thought of all these things. But हाँ we had to adjust with each other. We were very much qualified. We were talented, and हाँ lots of things. हाँ So I say, whomsoever is listening, the girls, the boys, and the young people, they should realize this, that our generation was trying their best. They are putting their best efforts to make a family. Family is the best unit of life. हम्म। कहते थे। So we were putting in that time, and but still, I find that today's generation is not up to the mark. नो, डेफिनेटली नो। Yes. देयर नो फीलिंग। Yeah, yeah. कम, बहुत कम फीलिंग्स हैं। यस यस, इट्स मैटर ऑफ फैक्ट फीलिंग। ही डिड दिस, आई डिड दिस, ओके सो यू डू दिस, एंड वेरी क्लिनिकल, बहुत Exactly. क्लिनिकल, क्लिनिकल। It's exactly so is happening everywhere around us, even in our families, these things. वो एहसास नहीं है, वो महसूस नहीं है, क्या कहते हैं वो, रहम करम नहीं। बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे और और ना ही वो जज्बा है। हैं. जज्बा तो इनका बिल्कुल मैकेनिकल हो चुका है. हाँ हाँ, इमोशंस नहीं है. है ही नहीं। हाँ जी, इमोशनल कोशेंट is not there, and what I find, that even they are not, some of them are not able to adjust with the life also. So यस। they take the drastic step, and they are not going to adjust with each other, like we at this age, when we are old, we are adjusting with each other. So some of them are really good. They have got very good qualities also. But the young generation of today, they should just concentrate on this. Take some our example and No, improve. I'll tell you two things, ma'am. I was, my friends in the society are mostly 6 or 7 year old children. Hmm. It's very funny Hmm. because एक तो उनकी मासूमियत बहुत अच्छी लगती है मुझे।
मासूम। हाँ, और वो You're a बोलती dada. You are a dada and nana, I'm sure. Same here, so I can see your emotions. और वो जो है मतलब दे कम टू मी कि अंकल बोले, नाना बोले, दादा बोले, जो भी है। हाँ, तो मैं उनकी बात सुनता हूँ, पिछले पेरेंट्स हूँ उनके। Hmm. ये मैंने देखा है। और अपने आप मतलब देख के तो समझ जाते हैं किसके पास जाना, किसके पास नहीं जाना है। बिल्कुल। दे फील दैट ये आदमी हमारी सुनेगा, तो मैं उनकी सुनता हूँ। और एक तो बच्ची है जो कहती है कि मेरे साथ भागो, तो मैं भागता हूँ। हाँ, Hmm. ये करता हूँ, वो करता हूँ। शी इज हैप्पी, एट द एंड ऑफ द शी इज हैप्पी। एंड आई डोंट नो अबाउट हर पेरेंट्स, बट एज लॉन्ग एज शी इज हैप्पी, आई फील हैप्पी, आई फील आई हैव डन माय बिट। एंड the other day I was with some young boy talking to him. जैसे बेटा कौन सी क्लास में हो? कहते हैं मैं फिफ्थ में हूँ। तो मैंने कहा कौन सी, कितने साल के हो? कहते 10 साल के। फिर मैंने कहा देखो भैया, आप अंकल आप कौन सी, मैंने कहा मैंने अभी 5वीं बड़ी मुश्किल से पास करी है। कहते हैं अंकल क्यों ऐसी बात करते? नो अंकल फ्रॉम दादा आई आई बिकेम अंकल, तो एक प्रमोशन हो गया मेरा। Yes, you are younger. तो मैंने कहा बेटा ये बता, आपने तो सारी क्लास पास कर दी है। मैंने कहा बेटा ये तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि क्लास तो अभी भी मेरी लगती है। Right. क्लास अभी भी लगती है। तो तो लगती ही रही है और बच्ची जो बगल में बैठे थे कहते हैं इसको मासूमियत में रहने दीजिए भाई साहब, इसको मासूमियत में रहने दीजिए। तो ये चीजें हैं, मैं देखता हूँ कि कई बच्चे आजकल दे क्रेव फॉर लव, दे क्रेव फॉर अटेंशन व्हिच पेरेंट्स कैन नॉट गिव। they are not getting it home किसी from का their नाइट parents. किसी का नाइट शिफ्ट है, किसी का डे शिफ्ट है, किसी जी का हाँ। वो शिफ्ट है। हाँ, मैंने कहा यार कैसे मैनेज करोगे? कहते आप इनको समझाओ। मैंने कहा मैं कैसे समझाऊंगा? मैं चलो ठीक है, कहानी कह दूंगा, ये कह दूंगा, वो कह दूंगा। पर जब तुमने टैब दे रखा उनको, तो सब चीज तो तुम्हारे ऊपर टैब रखेंगे। हम्म। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आजकल बड़ी क्लिनिकल हो गए हैं, बड़े कहते हैं, वो जैसे कहते हैं बड़े बेआबरू लौटे तेरे कूचे से हम। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये माहौल हो गया है। उनको अभी सीखना चाहिए कुछ पुरानी जनरेशन से। कि, और हम लोग टीचर्स हैं, हम तो छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। और हाँ, छोटे बच्चे हमेशा ही किसी न किसी उसमें रहते हैं, क्योंकि अकेले हैं, माँ बाप नहीं है, उनके ऊपर कोई भी विपत्ति आ सकती है। हम उनके टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ हम लोग सेशंस करते हैं, गुड टच एंड बैड टच। बिकॉज चाइल्ड, बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। दे आर गोइंग टू द स्कूल, दे आर ट्रैवलिंग इन द बसेस। छोटे बच्चे बता रही हूँ मैं, 10 साल के अंदर वाले बच्चे, वो दे कैन नॉट इवन टेल एनीबडी दैट उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो as a teacher, as an educators, we are trying our best to counsel the parents and to counsel the children। क्योंकि अभी बच्चों को, जैसे पहले देखिए, एट यहाँ पर मैं जॉइंट फैमिलीज की बात करूंगी, हाँ, क्योंकि हाँ। सब लोग सुन रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो लड़कियां समझदार हैं वो अपने पेरेंट, आई मीन इन लॉज के साथ या पेरेंट्स के साथ रहती हैं, जैसा भी होता है, तो उनके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं हम्म। पेरेंट्स की तरफ से। और देखिए, इन लॉज को भी इन लॉज कहना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उनको पेरेंट्स ही कहती हूँ। हाँ, पेरेंट्स। मेरी तो बहू, मेरे बेटे की वाइफ भी मेरी बेटी है। हाँ, बिल्कुल। देखो, अब उन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। जी हाँ, तो वो लोग अगर जॉइंट फैमिली में रहेंगे, हाँ, हाँ। तो देखिए, बड़े लोग भी इमोशनली अच्छा लगता है अपने बच्चे के साथ रहना। और हम्म, जो लड़कियां होशियार हैं, समझदार हैं, वो भी सोचती हैं कि मेरे बच्चा जो है अच्छी तरह से लुक्ड आफ्टर होता है, और इमोशनली उसके जो है ग्रैंड पेरेंट्स साथ में हैं। तो मेरी एक ये एडवाइस जो सुन रहे होंगे, अगर यंग लोग होंगे, तो उनको ये है कि अगर हो सके तो आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो तो है। मगर एक बात डॉक्टर साहब आपसे पूछनी थी कि देखिए आप भी रुड़की में थी, आप मुंबई में हैं, तो अब रुड़की तो बहुत बदल गया। बिल्कुल नहीं बदला। हाँ, नहीं बदल। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी तो सेम है, और सिटी खराब हो गया थोड़ा। हाँ, स्थिति खराब हो गई है। मगर जो माहौल पहले था, जो नजदीकियाँ, जो मोहब्बतें, जो जैसे
बड़े बड़े घर थे, बड़े बड़े वो थे, कहते हैं आंगन थे। तो उनमें जो हम लोग पलते थे और घूमते थे और भागते थे, शोर करते थे, वो बात अलग है। अब यहाँ पे स्काई स्क्रेपर में रह के ये नीचे देखना, वो देखना, तो वो फर्क तो आता है। तो वो जी। जिंदगी में एक तो सेहत बड़ी अच्छी रहती थी हाँ। और खुशी भी होती थी। हम्म। चाहे पिटते बहुत थे हम लोग। हाँ जी, बहुत अच्छी बात थी, लड़के ज्यादा पिटते थे। हम लोग को नहीं इतनी सजा दी जाती थी। मुर्गा जो है लड़कों को ही बनाते थे उस जमाने चाहे चाहे दूसरे के आंगन के आम चुरा के लाए या कुछ हो, में। मगर मगर एक मजा था, एक वो था, सादगी थी। और आजकल शहर में ये नहीं मिलेगा। नहीं, जी। आपको ढूंढते रह जाएंगे, जैसे वो सब फैक्ट्री का दाग होता है ना, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। शायद अगर आप सहारनपुर जाएं या कहीं और जाएं। मैं सहारनपुर भी जाती रहती हूँ। मैं हाँ, माय सिस्टर शी इज देयर, उसके हस्बैंड वहाँ पे डॉक्टर हैं। हम्म, और सहारनपुर मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ का। आई मीन वो सब बातें हैं जो आप कह रहे हैं, सहारनपुर में, जी गाजियाबाद में, या जी शामली में, जी 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 या जी वो सब बातें मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। तो जी मुझे जाना अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया बहुत अभी डिग्रेडेशन हो चुका है लोगों की सोच का। जी 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 जी। अब पता नहीं वहां पे है कि नहीं, अब ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अ, देखिए, अब तो आप एक 8 ईयर सिटी में है मुंबई, और आप बेहतर जानती है कि कैसे क्या होता है वहाँ पे। और जो कहते हैं, मैं गया था अभी बनारस। हाँ, जी हाँ। तो बनारस में बदलाव आया है, मगर कुछ चीजें हैं जो बनारस की वही कशिशें हैं। जी। मैं जैसे वो गलियां हैं और खाने पाने की, वो जैसे एक काशी चाट हाउस है, तो वो अपना 100 150 साल की परंपरा चला रहा है, वही मसाले वही चीज इस्तेमाल कर रहा है। और एक है कुबेर पान वाला, वो हम्म। भी 122 साल पुराना। बनारस में आपको 100 साल से कम चीज नहीं मिलेगी। जी हाँ। और फिर साहब बिस्मिल्लाह खान की गली। जी हाँ, ग्रेट। हाँ, तो वो दैट्स ग्रेट। चीज, वो भी एक परंपरा है, वही चल जी। रहा है। हाँ, थोड़ी सी सफाई वगैरह बात ज्यादा हो गई है, मगर वो आओ भैया बैठा हमारे साथ, चाय वाय पियो, बहुत अच्छा लगा वो हमको, जो हमको शहर में नहीं मिलता। जी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आप शहर में हैं, तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर सकती हैं कि आपको अगर मौका मिले कभी वहाँ पे जाने का। हाँ, मैं नहीं कहूँगा गांव, बट मेट्रो गांव। हाँ, अगर गांव कहूंगा तो फिर मैं तौहीन कर रहा हूँ ठीक। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए, मैं तो बनारस की पढ़ी हुई हूँ, जी, BHU। हाँ हाँ, 3 years आई वाज स्टडिंग देयर, माय फादर वाज पोस्टेड देयर। तो जी जी बनारस तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, बल्कि सुना है कि अब गलियां खत्म कर दी गई हैं, तो शायद वो जो बनारस की पुरानी परंपरा थी वो उतनी नहीं है वहाँ। जी जी। और मैं बरेली भी रह चुकी हूँ, लखनऊ भी रह हाँ चुकी हूँ। हाँ हाँ और मैं गांव में भी जाती हूँ, क्योंकि हमारा गांव है। हाँ और गांव में जमीन वगैरह होती है, हाँ फसलें होती है, और बचपन में भी हम लोग जाते थे। और वहां भी जो छोटे छोटे से स्ट्रीम्स होते हैं, वहां पे स्विमिंग भी करते थे हम लोग। तो हम अभी भी जाते हैं गांव में। हाँ और मुझे तो वो लाइफ भी अच्छी लगती है। बॉम्बे की लाइफ बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी हाँ शक नहीं है। हाँ हाँ इट्स अ वंडरफुल सिटी। लेकिन गांव का अपना अलग टेस्ट है, और महाराष्ट्र में बहुत से गांव हैं, और यहाँ के गांव, लेकिन बहुत अच्छे गांव हैं। छोटे हाँ शहर हाँ, हमारी जी तरफ हाँ के जी हाँ होती है ना, जैसे सहारनपुर हुआ, या और मुजफ्फरनगर वगैरह। तो मुजफ्फरनगर तो मेरी ससुराल है। जी जी। और बहुत सारे, मतलब कि मैं आई लव विलेजेस। गांव में मुझे अब थोड़ा सा शायद गांव का भी वो कल्चर नहीं रहा जो पहले था। आइए जी आओ जी। बैठो अलाव के चारों तरफ बैठकर रात को हाथ ताप के ठंड में, हाँ और हाँ हाँ, खाना एक दूसरे के यहाँ खाओ, और खेतों से जाकर आप सब्जी ले आइए, और बागों से आप टप के आम ले लीजिए, जी 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 क्योंकि आमों के मौसम में तो आम बहुत अच्छे होते हैं वहाँ। लेकिन और बैल बैल गाय बैल भी कम, अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं। जी हाँ जी हाँ। मगर तो महाराष्ट्र के कई गांव जैसे सांगली है, पुणे तो खैर मैं कहूँगा नहीं गाँव। हाँ,
उन्हें जी। तो अब कंक्रीट जंगल है। और कुछ जो छोटे छोटे गांव है, बहुत सुना अच्छे लोग हैं बहुत। सांगली तो गांव नहीं है, उसमें तो सारे हमारे भारतीय विद्यापीठ का और डॉक्टर डीवाई पाटिल के और पता नहीं कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। हम्म, तो वो सब गांव नहीं है, और हमारे कुछ शहरों से तो अच्छे ही हैं। हम्म। तो महाराष्ट्र थोड़ा सा इस हिसाब से अच्छा है। महाराष्ट्र भी साफ सुथरा है, सब हाँ काफी जी, मेरे अच्छा भी। है, और हमारे भी बहुत अच्छा है, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ के हाँ, लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो सबकी तारीफ करूंगी हाँ, क्योंकि हाँ। मैं सबके साथ जुड़ी हुई हूँ। नहीं किसी डॉक्टर का साहब, कुछ अच्छा है, किसी हाँ, का। वो तो आप महाराष्ट्र में रही हैं। आपको ये MS यूनिवर्सिटी कैसी लगी, महाराजा शिवराज काया जी राव। बड़ौदा में जी हाँ, कैसा लगा? क्योंकि बहुत अच्छा बड़ौदा। लगा बड़ौदा। वहाँ गुजराती लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, और वहाँ पर राजमहल है बड़ौदा में, जी। गायकवाड्स का, मैं उनसे भी थोड़ा जुड़ गई थी। और यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत। जैसे आप केम्ब्रिज की बिल्डिंग देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में, पुराने स्टाइल की बनी हुई, ये भी अच्छे स्टाइल की बने हुए हैं। और पढ़ाई भी अच्छी है। तो MS University is good. I was in the chemistry department. I was lecturer over there, and I जी, was doing postdoctoral research also with Dr. P.K. Bhattacharya. जी। So, because my husband is posted in ONGC there, हाँ, हाँ, तो फिर वहां पर भी बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। Baroda is a very good city. Even Ahmedabad is a very good city. हाँ, बट the I trend stayed in there Ahmedabad, also. the trend in Ahmedabad is more on business. Yes, Business. बिजनेस भी है, अच्छा भी है, और गरबा खेला जाता है, और भी पतंग पतंग वाला भी होता है। बहुत अच्छा लगता है वहां पर। उत्तरायण में और कहते हैं जी ये हाँ, उत्तरायण में। गरबा तो, गरबा तो 1 महीने से पहले तैयारी हो जाती जी है। हाँ, जी हाँ। और वहाँ और एक अच्छी बात है कि हाँ, वहाँ पर जो है, गर्ल्स को कोई रात को पूरी रात भी अगर गरबा चलता है तो कोई उनको कोई डर नहीं है। वो कोई लोग डर नहीं। अच्छी तरह से उस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, 4 बजे सुबह तक मैंने देखा है यंग गर्ल्स गेटिंग ऑन टू टैक्सीज और इनटू बसेस एंड गोइंग होम। यस, कोई उनका वो नहीं। वहाँ बहुत अच्छा और एटमोसफेयर है, महाराष्ट्र एंड गुजरात में गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा मुझे वो माहौल, क्योंकि मैं भी नौ आप भी साल रहे हैं वहाँ पर, मैं आप रहे गुजरात हैं? में 9 साल रहा हूँ। 1 साल अहमदाबाद, जी हाँ। और 1 साल आपका गोंदिया में, गोंदिया अच्छा। तिरोड़ा। हाँ। जी हाँ, जी। और फिर 8 साल समझिए कच्छ में। ठीक है, तो आप किस उसमें थे, महकमे में? मैंने काफी पुराना शब्द उर्दू का यूज किया है। देखिए मैं लिंग्विस्ट हूँ, चाइनीज लैंग्वेज का मेरा ओके। एक है। तो जो पावर प्लांट्स आ रहे हैं, जो बने हैं, तो सारी चाइनीज मशीनरी से बने हुए हैं। जी हाँ, जी। इवन अभी भी जो आपका कहते हैं पेट्रोकेमिकल का एक बन रहा है ओके। अंकलेश्वर में, कुछ अदानी का बना रहे हैं। दैट इज ऑल्सो विद चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड चाइनीज मशीनरी, चाहे एक्नॉलेज करे ना करे। हाँ। तो मैं वहाँ पे कम्युनिकेशन करता था इन अदानीज। जी अदानी के साथ। My husband retired as a vice president from oil exploration from Adani only. अच्छा, अच्छा। तो Long back. मतलब वो रिटायर कहाँ हुए हैं? फिर से? रिटायर अदानी से ही हुए हैं। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने पूरा सेटअप दे दिया होगा उनको वहाँ पे अंकलेश्वर में, कहाँ पे इनका, या भरूच में है इनका? हाँ, भरूच में भी ONGC का काफी। हाँ। उनको बोलो, उनको बता दो, आई ऑन द कॉल। तो यस। उनको वो तो ऑयल एक्सप्लोरेशन में था, मैं कन्वेंशनल एनर्जी, कोल फायर। अच्छा अच्छा, तो आप लोग आप किस ईयर में थे? जी। आप मैं किस ईयर में थे? 2009 to 2017। अच्छा। सो माय हस्बैंड वाज देयर, आई थिंक ही रिटायर्ड इन 14 और 15। उससे पूछो क्या बात है। हाँ, मैं वहाँ से आई वेंट टू कवाई, राजस्थान। फिर राजस्थान से वापस आया, देन दे सेंट मी टू पेरोड़ा, महाराष्ट्र। देन आई वाज स्पॉन्सर्ड टू कामोती इन तमिलनाडु, रामकृष्णपुरम। जी हाँ। हाँ, रामनाथपुरम का जिला, रामनाथपुरम का डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे 1 साल रहा, लॉजिस्टिक्स किया सारा। फिर कहा कि आप जाइए गुजरात। मैंने कहा नहीं जाऊँगा मैं गुजरात, मुझे जाना ही पड़ेगा गुजरात में। फिर नया प्रोजेक्ट किया। फिर 2017 में काफी हो गया। वहाँ पे आपको रिन्यूएबल एनर्जी का प्लांट लगाया था कि आपका सोलर पैनल्स का असेंबली और सोलर सेल्स की मेकिंग। अच्छा लगा, अच्छा अच्छा एक्सपीरियंस था, बढ़िया था।
अब देखिए आगे क्या होता है, हम तो हमेशा काम के लिए तैयार हैं। डॉक्टर साहब कहाँ चले गई आप? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब त्यागी, यस सर, यस सर। आप आ गई? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आई एम वेरी मच हियर। अच्छा अच्छा, कुछ वो थोड़ा सा ठीक है। श्रीलंका बस से एक बस यही दूसरा कहता कॉल। हूँ कि जी हाँ। अल्लाह ताला सब सही रखे। और कहते हैं काम कभी रुकता नहीं है, काम चलता रहता है हमेशा। जी हाँ, लेकिन अपने फुटप्रिंट्स छोड़ने चाहिए हमारी जी हाँ, जी जनरेशन। हाँ, जी हाँ, हाँ, तो अपने निशान द छोड़ना। सैंड्स ऑफ टाइम, फुटप्रिंट इन सैंड्स ऑफ टाइम। जी हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो छोड़ के आ गए और अच्छा ही लगा। तो यही है, देखिए अब कहते हैं तो यही आप देखते रहिए, आपके हस्बैंड अभी यहीं पे हैं या बॉम्बे में, या क्या है, क्या कर रहे बॉम्बे में हैं? ही हम लोग रहते हैं। बॉम्बे बहुत अच्छी सिटी है हाँ हाँ और अच्छा लगता है यहाँ पर। हाँ, यहाँ वो बड़े तो अच्छे बहुत बहुत। अच्छे बिल्डिंग्स हैं, कैंपस हैं, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब किसी भी तरह की कोई गलत बात यहाँ नहीं होती है। हम्म, और हम एडजस्ट हो गए हैं यहाँ पर। मतलब यहाँ की जो कल्चर है, बिकॉज आई एम हियर फॉर लास्ट 40 years। जी जी, तब जी। तो फिर आप मुंबई आओ। जी मुंबई हाँ। का, मुंबई जी आओ। एक साल मुझे मुंबई में भी रखा था हाँ। जी। और मुझे अच्छा लगा। जी हाँ। क्योंकि मुंबई का वेरी फ्रैंक एंड आउटराइट, मतलब फ्रैंक है, मुंह पे बोल देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं चलेगा। जी। दैट्स व्हाट आई लाइक। बट यही है कि घर की दिक्कत बहुत है। और मैं उस टाइम रहता था साइन में। ओके, हम लोग चेंबूर में काफी दिन। हाँ, आप फिर से कट गई, फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज, आवाज, आवाज हाँ, अनम्यूट। हम लोग पहले चेंबूर में थे। साइन जी, और चेंबूर तो पास हैं। और अब हाँ हाँ कांदिवली आ गए। हाँ हाँ। और तो जी जी जी, तो अब कहाँ चले गए? नवी? वी आर एट कांदिवली, कांदिवली। अच्छा, कांचीपुरी पास, जी अच्छा। हाँ। हरी हरी जगह है, हरी हरी। तो मैं भी चेंबूर नाका समझिए, वो जो फ्लाईओवर चालू होता है ना, वहीं पे। राइट, राइट। सो यू आर कमिंग टू मुंबई क्वाइट ऑफन इट सीम्स। नहीं, बहुत पहले एक साल लगातार रहा। देन आई हैड टू ट्रैवल टू चाइना ऑल्सो, ट्रैवल टू अदर प्लेसेस फॉर वर्क, काम करने के लिए। चाइना का तो आपका, यू आर टीचिंग द लैंग्वेज, आई जी, थिंक फिर यू आर अ देन ट्रेनर। आई वाज आल्सो इनटू परचेस ऑफ इक्विपमेंट, क्या कैसा है, क्वालिटी कंट्रोल, और ये देखना वो देखना, प्रेजेंटेशन देना चाइनीज को। तो अच्छा अच्छा सीखने को मिला, उनसे भी सीखने को मिला। और मुझे मालूम नहीं था कि उन्होंने इतना कूटा और पीटा मुझे कि इंजीनियरिंग भी सिखा दी। Okay, हाँ Chinese हाँ are good people. हाँ, Actually, we got an opportunity because my husband was in ONGC Videsh Limited. So Genpoc is the company. He's also in the oil, the exploration or whatever. So that time I met some Chinese in Dubai. अच्छा अच्छा, So they were like us only. हाँ, I 18 asked them a very tricky हाँ question. हाँ I asked them, you are allowed for one child only. You might be knowing that they can have only one child. Mostly, I mean. So, अब तीन तीन हो गए मैम, तीन हो गए। अच्छा, अब 3 हो गए और तो गांव में चार भी होते हैं। गांव की बात अलग है। तो then we asked that Chinese that you prefer a girl or a boy? They said a boy only. So हाँ that हाँ, way, so that was a tricky question which I asked. हाँ, वो उस पे ये भी है, थोड़ा एशियन वो रखे, बिकॉज गर्ल्स आर रिस्पेक्टेड मच, दे आर टैलेंटेड, एंड बिफोर दे गेट मैरिड you have to give them a dowry. The man has to give a dowry to them. Only then they will move into the house. Yeah. अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो Yes. इन लॉज हैं उनके लिए अलग घर होगा और आपके लिए अलग घर होगा। तो ये जी हाँ। बड़े स्ट्रिक्ट कंडीशन हैं which the boy has to meet, हम्म, and only when he meets these conditions then the she will say you are my husband. हम्म। तो ये चीजें हैं। इंडिया में खैर बात दूसरी है, इंडिया बहुत बिंदास कंट्री है जी हाँ। और वहाँ पे कुछ अलग है।
Girls rule the roost, like अब हमारे नॉर्थ ईस्ट में आप गई हैं कभी मैम? जी हाँ, my husband was posted in Assam हाँ, at मैट्रिक। Sibsagar. हाँ, So I आगे। was there in central school for some ठीक time. My daughter ठीक। was born there only. तो उसी का नाम शिवांगी रख दिया सिबसागर से। अच्छा मैम, ये बताइए कि इतना आपने दौर किया है, सब चीज किया है, जी, आप व्हाट मैसेज कैन यू गिव टू द वर्ल्ड टुडे? मैंने आज आपसे बहुत कुछ बात की है, मे थैंक यू। बी इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, व्हिच आई अपोलोजाइज। हाँ, No, बट no, it's okay. आप, Why? It is welcome. हाँ, तो No आप, व्हाट इज apology. योर मैसेज टू द वर्ल्ड एंड हाउ वुड यू dwell upon your experiences, upon your teachings to give to the youth of today? We discussed two things, patience and tolerance. बाकी Yes. आप बताइए मैम। The patience and tolerance is very important. I'll take a cue from your talks only. And I will say that they should realize that the family is the unit and they should, give value to the family and they should have good habits. They should be like a warrior, Yes. like facing whatever comes, and they should help others. It's very important. They should give back to the society what they have learned, and they should try to have good values. Value system is very good in our country, and they should have values, and they should also learn the resilience. Like Yes. after Corona, many people have again come up. They were like warriors, and then so these values they should have, and the family values is the most important, and they Oh, should give respect to the elders, yes. parents. ये संस्कार तो नहीं This is what I can, ये- the message I can give them. तो आप अभी आपके बच्चे जो हैं आपके साथ हैं मैम, या दे आर ओवरसीज? My son is with me. हाँ हाँ Overseas मैंने encourage नहीं किया, जी। and the daughter is also in India, but they keep on visiting other countries. एंड इज ही एन इंजीनियर और इज ही अ टीचर? Everybody is engineer in my family except me. तो आप, हाँ, My brothers, my father, my husband, my son-in-law, my daughter, my son. Only my daughter-in-law, she's an MBA. She's not an engineer. एंड व्हाट अबाउट योर ग्रैंडचिल्ड्रन? Yeah. ग्रैंडचिल्ड्रन, What is that? ग्रैंड ग्रैंड मतलब आपके Grant, पोता they are very पोती, small. नाती They're very नाती? small. अभी हाँ छोटे बच्चे हैं. Sir, हाँ। I've got another meeting. ओके ओके uh, मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक yeah. केयर एंड वी मीट अगेन। Yes. पहली बार है, आखिरी बार नहीं है। नहीं sir, बिल्कुल भी नहीं. और I will आप interview you one day. प्लीज प्लीज, हम बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू सो मच डॉक्टर बहुत अच्छा लगा. साहब। आपने मुझे अपना इतना अमूल्य बहुमूल्य समय दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. आप आ गई, मैं बस आपसे हमको यही खुशी है। विदा लेती हूँ. ओके, और आगे की गुड नाइट मैम, गुड नाइट। गुड नाइट. गुड नाइट. भैया, और सबको गुड विशेस. एवरीबडी हाँ, those who are listening, good wishes. जी जी, गुड Blessings to everyone. थैंक भैया।